Hello students, welcome to virtual social science classes. Today we are going to learn a lesson from Social and Political Part 1, Class 6 NCERT, Diversity and Discrimination. Okay. In the previous class we discussed the meaning of diversity. You already know what is the meaning of diversity. Diversity means are different. Okay. We already discussed the difference between the two boys, that is Samir Ek and Samir Do, who is poor and rich, educated and uneducated, like that. Okay. Now in this topic we'll discuss diversity and discrimination. Okay. How the people are different. There are many things make us what we are. Okay, the way we live our lifestyle, the language we speak, what we eat, what we wear, the games we play, the festivals we celebrate. Okay, मैं आपको पहली क्लास में बता चुकी हूँ डाइवर्सिटी क्या है. ओके, तो हम लोग उसमें स्टोरी भी सीखे थे. जो समीर एक और समीर दो बच्चे हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं. उनका रहन सहन, उनका जो पहनावा सब में डिफरेंट है. तो मैंने बताया था डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट, वैरायटी. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था. अगर कुछ कार्टून बनाने के लिए आपके टीचर बोलते हैं तो आप सब लोग डिफरेंट कार्टून के पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि आपका जो टेस्ट है अलग है. ओके, तो सेम यहाँ पर हाउ द पीपल डिफरेंट. तो डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? All this influenced by the geography and the history of the place where the people live. So we already written the diversity and discrimination. So India is a country of diversity. It's already discussed also. Now let us see the glimpse of Indians diversity. Okay, हम लोग एक झलक भारत के जो diversity के दिखाएंगे. There are 8 major religions. The first point, there are 8 major religions in the world. Okay, every single one of them is practices in India. Okay, the second point, more than 1,600 languages that are the people's mother tongue. And number third, more than 100 dance forms. आप अभी इसमें अगर एक झलक देखेंगे तो ये पता चल सकेगा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है. उसमें वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन है जो यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में. ओके, सेम केस अगर हम लैंग्वेजेस के बारे में देखेंगे, देयर आर हाउ मेनी लैंग्वेज, कितने लैंग्वेज हैं? 1,600 लैंग्वेजेस जो इंडिया के पीपल्स जो मदर टंग के यूज में अपनी मातृभाषा के रूप में यहाँ पर बोला जाता है. और उसी प्रकार तीसरे पॉइंट से अगर देखा जाएगा तो वी कैन सी 100 डांस फॉर्म आर देयर. थ्रू दिस we can understand that India is a land of diversity. इससे हम एक पता चल सकता है कि हमारा जो भारत देश है ये एक डाइवर्सिटी वाला देश है. ओके, now this diversity, you know, we are living in a different place, we are talking different languages, we are practicing different festivals, we are playing different games. This diversity is not always celebrated. Why? Okay, now because we feel safe and secure with the people who are similar to us. अब आप जानते हो, आप उनसे ही परिचित होंगे जिसे आप एकदम जानते हो, जिसे आप अच्छे से जानते हो. Okay, now because we feel safe and secure with the people who are similar to us. Same case, we may find the people who are different from us as a stranger and unfamiliar. Okay, now we may not be understand or know the reason why they are different.
Here the people also forms the certain attitude and opinion about others. Through this the diversity become difference. We already said that diversity is not always celebrated. Okay, the reason that because we feel safe and secure with the people who look, who talk, dress and think like us. Okay, diversity is why we are not celebrating. Why? Because see, as a people we feel safe. हमारे पास हम लोग एक ओपिनियन, हम लोग उन इंसान से हम लोग सेफ है जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे हमसे जो बात करते हैं, हमारे जैसे ड्रेस पहनते हैं और हमारे जैसे सोचते हैं. Okay, now this diversity, that is why it is a topic, it is diversity become difference. How it become difference? Because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like this. Okay, now people also form certain attitudes and opinion about other who are not like them. Okay, हमारे एक धारणा है. See, we find the people who are different from us as a strange and unfamiliar. Familiar. Now why? Because here we get a term that is prejudice. Okay children, we will come to the next topic, that is prejudice. Okay, now what do you mean by prejudice? Means when our opinion about certain people are always negative. Okay, and this become a prejudice that we carry about them. Now prejudice means, what means to judge others people or see them as inferior. Okay, pre means पहले and justice means न्याय means पहले से तय कर देना. That means to judge other people negatively or see them as an inferior. Okay, now how does it arise? When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up to respecting others. हम लोग ये कैसे arise होते हैं? How it is arise? When we think that this is the only particular way, is the best way, and the other way we doing things, we often end up and respecting others. If we can take हम लोग एक example, उदाहरण के तौर पर we can take an example, that is our English language. English language. Okay, English language is the best language. Other language is not important. English को ऐसे important, बड़ा महत्वपूर्ण लैंग्वेज माना गया है और बाकी सब लैंग्वेज को उतना इम्पोर्टेंस, उतना महत्वपूर्ण नहीं है. वी आर जजिंग दिस इन अदर लैंग्वेज इन अ नेगेटिव वे. तो हम लोग दूसरा लैंग्वेज को क्या जज ऑलरेडी कर रहे हैं कि इंग्लिश इज द बेस्ट और बाकी सब लैंग्वेज उतना इम्पोर्टेंस नहीं. एज अ रिजल्ट वी may नॉट रेस्पेक्ट द पीपल और स्पीकिंग अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश. तो हम लोग ऐसे जैसे जो आदमी जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं और जो इंग्लिश में नहीं बात करते उनको हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देते. This is the difference. Now I think you understand. And coming to this will come, people can be prejudiced about many things. हम लोग prejudice पहले से कर सकते हैं ना. तो what the other peoples like the religious belief, okay, the color of the skin, then the religion they come from, the language they speak, the clothes they wear. Okay, we will already prejudice. We already think that. Okay, now this prejudice sometimes hurt these people. Sometimes they are so strong we do not accept anything contrary to them. हम लोग उसको accept नहीं करते. तो what happened? So हमारा जो फ्रेंडशिप है दूसरे से वो क्या हो जाता है, ब्रेक होता है. ये ब्रेक के कारण उनको क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है. Now coming to this, in this chapter you will see an example regarding the prejudice of a ruler and the urban people. Okay children, there is a statement in your book about the ruler and the urban life of the
like the people in India. Okay. Now in the rural people, more than 50% of the Indian lives in village. The villager do not care about their health. They are full of superstitious. People in village are backward and do not like to use the modern agriculture technology. In the peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the field. Villagers forced to migrate to the city in search of work. Okay. Now compared to the urban people, the life in the city is easy. People are spoiled and lazy. In city, the families spend very little time with each other. People in city only care about money and not about the people. Living in city is expensive. A large part of the people's earning is spent on rent and transport. City people cannot be trusted. They are cunning and corrupted. Okay. Now you have seen, आप लोग देखे होंगे, आप कंपेयर कर देंगे विलेज पीपल और जो शहर गांव के लोग और शहर के लोग में जो शहर के लोग ऑलरेडी उनमें एक मानना रखते हैं कि जो विलेज के लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वो लोग क्या है, एग्रीकल्चर लेबर लोग होते हैं, और विलेज का जो लोग है, गांव के शहर लोग हैं, वो लोग अपने हेल्थ के बारे में उतना कॉन्शियस नहीं रहते हैं और वो लोग ज़्यादातर अंधविश्वास रहते हैं. ओके. एंड द पीपल इन विलेज बहुत पिछड़े जात के रहते हैं और उनको जो नई तकनीकें कृषि के जो करने वो उनको पता नहीं रहता है, क्योंकि मैक्सिमम जो लेबरर्स एग्रीकल्चर पीपल है ओके अनपढ़ रहते हैं. एंड दे कभी कभार जब उनका जो कटाई का वक्त आता है, अपने जो फसल की कटाई के वक्त 12 से 14 घंटा तक उन लोग कहाँ पर काम करते हैं, वो लोग अपने वही फील्ड खेती भी काम करते हैं. और कभी कभार वो लोग क्या करते हैं, विलेज को एक लोग फोर्स होते हैं अपने गांव छोड़ के शहर पर जाना पड़ता है, किसके, नौकरी के दौर पर. सेम केस अगर आप देखेंगे तो अर्बन पीपल का जो कॉन्सेप्ट है प्री जज, हम लोग पहले से जज कर देते कैसे रहते. तो विलेज जो शहर के लोग कैसे रहते हैं, बहुत उनका जो लाइफ है, सिटी का लाइफ बहुत इजी रहता है, आराम की ज़िंदगी है, और वो लोग आराम की ज़िंदगी की वजह से वो लोग क्या है, बहुत ही आलसी होते हैं. ओके. और वो लोग अपने मैक्सिमम टाइम है अपने फैमिली मेम्बर के साथ बिता नहीं सकते, बिकॉज वो लोग हर वक्त बिजी रहते हैं अपने काम पर, और उनको खाली मेन मोटिव किसमें रहता है, पैसा कमाना. दे आर नॉट बॉदरिंग, वो लोग फैमिली को बॉदर नहीं करते. एंड द लिविंग इन द सिटी इज वेरी एक्सपेंसिव, ऐसे एक धारणा है, वो लोग पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर सिटी में रहते हैं तो पैसा रहना तभी रह सकते हैं. नाउ लार्ज पीपल अर्निंग एंड स्पेंडिंग क्या के लिए, रेंट, घर का किराया देते हुए, और ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसे. एंड और जो सिटी के जो पीपल बहुत क्या रहते हैं, दे आर नॉट ट्रस्टिंग, उनको हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, वो लोग बहुत चालाक रहते हैं और बहुत खराब भी रहते हैं. दिस इज सो दिस स्टेटमेंट्स एज विलेजर यू कैन सी दैट विलेज पीपल आर arrogant and superstitious. हम लोग पहले से मान लेते हैं. That means prejudice. Okay. I hope you understand this topic. Prejudice means क्या? That means we judge the people other negatively or as a inferior. Okay. Now coming to this, I think all of you are familiar with the topic, that is gender difference. Okay. Gender difference means difference between a boy and a girl. Okay, till now we are taught about what is the diversity and the difference. Then we come to the topic that is prejudice. Now we are coming to the next topic, that is gender difference. Gender माने आपको पता है लिंग, जो स्त्री एंड पुरुष की जो है, boy and girl. Okay, now here that creating a stereotypes. Okay, creating a stereotype. See, there are some statements which often used to describe such differences between a boy and a girl. Okay. Now the difference is like that. See, in your book also there is a statement given here. I will read the statement. It's like that. They are behaved. They are soft spoken and gentle. They are physically strong. They are naughty, they are good at dance and painting, they do not cry,
they are rowdy, they are good at sports, they are good at cooking, they are emotional. Now the statements is there. You can see the boys and the girls statement is there. See, the statement is like that. Boys are, if you take the statement that the boys are not supposed to cry. If they are crying, shows that they are weak and not strong. आप पता है एक कहावत है जो लड़का और लड़की में, लड़का अगर रोता है गिर के रो जाते तो मम्मी बोलते हैं नहीं तुम रोना नहीं, क्यों? क्योंकि तुम क्या है, लड़का है, स्ट्रॉन्ग बनना है, बोलते हैं ना. सो बॉयज स्टार्टेड बिलीविंग दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस. तो लोग छोटा से ही उनको पता है रोने का मतलब क्या, वीकनेस. लड़की लोग ज़्यादा रोते हैं. ओके, नाउ वी आर फिक्सिंग. नाउ as they grow, the boys they teach themselves not to cry. जैसे जैसे लोग बड़ा होते जाते हैं और वो लोग अपने आप को सिखा देते हैं कि हम लोग को रोना नहीं. Now this is how the boys and girls are such. Okay, the such statement constantly heard and accept without a second stop. Now here we comes that देखिए boys को एक concept पहले से है कि वो लोगों को रोना नहीं. और ये भी हमारा जो सोसाइटी है उसमें बताता है कि boys only meant for the outside works and the girls has to do the work inside the house. they छोटे से सुनते हैं कि आप लड़की लोगों को एक दिन शादी करके जाना है, आपका घर का काम अच्छे से आता रहना है. ये दैट इज मेंट ऑलरेडी फिक्स करके रख देते हैं इन आवर सोसाइटी. सो दैट क्रिएटिंग अ स्टीरियोटाइप्स. Okay, now what do you mean by stereotypes? We fit, but stereotypes, here we can say that when we fix up people into one image, we create a stereotype. The stereotype means, now what we already say that when we fix up people into one image, we create a stereotype. Now stereotype, they see boys have some works, some girls have some works. Boys, they have the trend, the digging, planting, watering. This is the works of the boys has to do. They have to do outside. Whereas if you come to the girls, they have to do cooking, cleaning the utensil, sweeping, etc. We fit both boys and girls into a one image that society create around us. Okay, हम लोग ये stereotype किसको बोलते हैं, एक image already fix करता है कि boys यही काम करना है, girls you have to do this work only. So this means we fixing into one image we called as. So same in the country also. If you see that in the country, our religion, in the sex, in the race, the economical background, etc. all this comes as stereotypes. Okay, now stereotypes into a large pattern. Okay, now here when people says that who belongs to a particular country or religion, sex, economical background, they all are using this stereotypes because society already as a mold करके रखा है. Say in each and every field there are some fixed is there. So now this creating what are there's that creating the results of stereotype. Now the results of stereotypes. I hope you understand. The next topic is the result of stereotypes. Stereotype stops us looking at each person in a unique individual with his own special qualities. Stops us looking at each person as a unique individual with his own special quality. अभी स्टीरियोटाइप ऐसा है कि उसको हम वो स्टॉप कर देते हैं. सपोज एक अगर अभी आप लोग ऑलरेडी फिक्स है, द बॉयज आर मेंट फॉर टू डू द आउटसाइड वर्क. सपोज द बॉयज यूज्ड टू ड्राइव द कार एवरीथिंग. अगर वहाँ पर एक लड़की ड्राइव करेगा तो दे हैव द क्वालिटीज, बट सोसाइटी ऑलरेडी ऐसे कर दिए कि लड़की लोग नहीं चलाते. तो क्या हो जाता है, उनका जो स्पेशल क्वालिटीज है वो क्या कर देते हैं, हट जाते हैं. ओके, नाउ सेम केस if you see, it leads to fit a large number of people only in one pattern or type. It leads to fit a large number of people into only one pattern or type.
Here be this result a stereotype. Stereotypes prevent us doing certain things that we might otherwise good at. ओके और वो स्टीरियोटाइप क्या करते थे, हम लोगों वो काम करने जो काम हम अगर हम जो फील्ड में शाइन कर सकते हैं वहाँ पर हमें रोक देते हैं. ओके सो वी आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव. Okay, same case in your book there is a picture about the three this physically handicapped children. The children you can see in the illustration here we have seen that disabled, the word disabled. The term has been changed now, termed as children with special needs. Okay, the common stereotypes about them is given in large letter. Their own feeling and thoughts are given here. नाउ सी ये जो बच्चे लोग हैंडीकैप है उनका एक नाम दिया डिसेबल, मगर अभी उनको वो चेंज कर दिए. वो चेंज करके क्या बताया गया है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. उनका स्पेशल नीड्स उनको ऐसा ताकि उनको भी फीलनेस नहीं हो जाए. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.